कोर्स है सोशल इंटरप्राइज पे, उसको उन्होंने वो कोर्स उन्होंने अटेम्प्ट किया एंड दे कंप्लीटेड दैट कोर्स एंड दे डेवलप्ड देयर प्लान्स, बिजनेस पिचेस which they are going to present today here. I'm really glad ये इवेंट बहुत दिनों से पोस्टपोन होता जा रहा था. हम डिफरेंट रीजंस की वजह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे, लेकिन फ्लड की वजह से और कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की वजह से हम इस इवेंट को डिले कर रहे थे. बट फाइनली टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट आवर इंटर्न्स एंड एफर्ट्स ऑफ लाइटलिहुड project. Livelihood project is a women development department project, and it is funded by JICA, Japanese International Corporate Agency. I welcome you all in today's event, and for this event we have our chief guest, Secretary Women Development Department, Ms. Anjum Iqbal Jumani. She is here with us. We have JICA project team, and we have guests from University of Sindh. We have guests from NIC Hyderabad. We have guests from University Begum Nasrut Bhutto University for Women Sakkar. We have guests from Jinnah University for Women Sakkar, and other guests from Women Development Department. I welcome you all here. We are going to formally start our event with opening remarks from Secretary Women Development Department, Ms. Anjum Iqbal Jumani. Madam, please. It's my pleasure to welcome all of you in our today's program, 5 Decades of Internship for Emerging Women Social Entrepreneurs through Livelihood project. WED has a mandate to enhance the WED has mandate. WDD means Women Development Department has mandate to enhance the socio-economic status of the women and protect their rights without any discrimination. So इसी तरह WDD has a project assisted by JICA livelihood improvement in the livelihood of female home-based worker. These home-based workers are those who are working from their houses, not those workers who are working in our homes as a maid. Through this project, we improve their life management skill, easy access to finance and income generation. So detailed introduction will be given by Mania Sa and Walia Qureshi Sa. So first phase, I will tell you. The first phase of this project has successfully completed. Sakkar, Hairpur and Shikarpur in interior Sindh and Karachi. There are 350 female home-based workers were selected, and they provide different kind of trainings in life management skills, income generation support. Our successful module is graduation module. बिसाइड हम सिर्फ इन बच्चों की ख्वातीन जो होम बेस्ड वर्कर हैं, हम सिर्फ उनके लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं. ये फीमेल होम बेस्ड वर्कर वो हैं जो इनिशियली जिनके बच्चे 8, 9 में आके 10 में आके स्कूल छोड़ देते हैं. हमारे प्रोजेक्ट के हमने एक मॉड्यूल और एक्टिविटी ये भी रखी थी जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है कराची में, ग्रेजुएशन मॉड्यूल, जिसमें कि उन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की जाती है कि 9, 10 या 8 के बाद जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, 1100 प्लस प्रोफेशंस हैं दुनिया में, कि आप स्कूल मत छोड़ें बल्कि आप वो टेक्निकल जो है एजुकेशन लें और अपनी फैमिली की लाइफ को, इनकम को सपोर्ट करें. इसी तरह फिर एक सेकंड फेज जब हमारा स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने प्रमोशन ऑफ सोशल बिजनेस का था, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो है IBA के कंसल्टेंट हमने डिपार्टमेंट ने और JICA ने मिलकर हायर किए. उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी एक्टिविटीज़ उसमें स्टार्ट हो गई, जिसमें जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी है, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी है. पायलट एक्टिविटी हमने जो स्टार्ट करवाई थी वो थी बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सक्खर
और कराची में जीना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में। तो इस तरह ये काफ़ी बच्चे थे जो कंप्लीट करते करते, जिन्होंने मेरा ख्याल है कभी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक्चुअल मीनिंग भी नहीं समझे होंगे, उन बच्चियों ने जो बच्चे वहाँ पे थे उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। फिर एक इनका फाइनली जो है 6 हमने जो है सिलेक्ट किए। 3 जो हैं जीना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची की स्टूडेंट्स थी और 3 जो हैं सक्खर से बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स हैं। आज ये अपना आपको लेटर ऑन जो अभी हमारा एजेंडा है उसमें ये अपना जो भी इनके प्लान्स हैं, जो इन्होंने अपनी एफर्ट्स किए हैं, वो आपसे शेयर करेंगी। मैं सबको वेलकम वंस अगेन एक दफ़ा फिर करती हूँ लेट आने में कि आपका जो ब्रिज है हैदराबाद का, हम वापस पोइट्री से घूम कर आए हैं, तो इंतज़ार का माजरत। और फर्दर जो इस प्रोजेक्ट की डिटेल है वो मामिया साहब एंड वली कुरैशी साहब आप लोगों से जो है प्रेजेंटेशन के साथ आपको ब्रीफ देंगे उसका। थैंक यू वेरी मच। Thank you, madam, for your kind remarks. For the introduction of Livelihood project, we have Ms. Gio Mamia. She is Chief Advisor for Livelihood project. Ms. Gio Mamia is leading on front this project for last 4.5 years or maybe 5 years. And she is working in different sectors, development sector projects. Like she has worked on agriculture, she has worked on tourism, gender empowerment, and she has been working across the world. So Ms. Gio Mamia, she is Chief Advisor of Livelihood project. She is going to share with us the introduction of Livelihood project and social business promotion training. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियो मामिया है। I'm a chief advisor of JICA Light F project. So I'm very much pleasure to be here today for the very first step of our interns for their journey of social business. Taking this opportunity, I would like to briefly introduce our project and the social business promotion training. Yes, this is a background of project. I think, as you are already aware, the background of this project is the low labor participation of women in Pakistan. The rate of labor participation of women in Pakistan is the lowest in South Asia. And most of the people, but female are actually working. But they are not recognized in the statistics because they are working in informal sector and mostly stayed at home because they are female home-based workers. So uplifting of the female home-based worker has a very much impact of the entire women's improvement of livelihood. This is the background of our project. So we have been working for this project for 5 years. 1 year planning phase starting from 2017, and implementation started from 2018. And now we suppose to complete this project August next year. And then we have an implementation agency, Women Development Department, where Anjun-san is leading strongly our project. And then we have partner organizations, and we are doing the pilot project in rural area and the urban area. And in rural area, we have a partner with Sindh Rural Support Organization, SRSO, as well as Sindh Technical Education and Vocational Training Authority, STEPTA. And then we have a partner in Karachi with Women Development Foundation, Pakistan. And what we are doing is we have 6
activity shown here. Then the four activity we call output in JICA's project. Those four activity, pilot activity to improve livelihood and well-being of female home-based workers. Then among four activity, those three activity, these three activity is targeting for the same female home-based worker. And we called graduation model, explained by An Jun-san, target same lady, and then providing the assistance of life management capacity development, and financial service access improvement, and income generation support. And we are doing this graduation model pilot activity in Sakkar and Karachi. But and this is targeting existing female home-based worker. But our aim is not to keep lady at home forever. Yeah, because we understand there are more opportunity for young generations, especially in Karachi. They don't have to work at home. They have work at the office or factory or other occupations. So for this kind of next generation, male and female, we have a career education activity. This is done only in Karachi. And through these pilot activity, we accumulate the knowledge and experience of how to support female home-based workers and their next generations. And then in order for this activity to promote after the project period, we develop a toolkit. Toolkit is consisting of the training material, video, and you saw the video, graduation model video. That is a part of our toolkit. Then I think those kind of tools can be utilized by any organization or any government department or any individual who want to support a female home-based worker in future. So we developed the toolkit. Now we are working to finalize this toolkit. Then, through conducting these activities, together with pilot project team, we also aim to enhance capacity development of women development department. Then after the project, we expect WDD to promote these toolkit so that more female home-based workers and their next generation can improve their livelihood and well-being. This is a concept of our project. And about graduation model, you saw the video, and it's, I think, much quicker for you to watch the video. But the concept is like this. Sorry. Yeah. We provide the first 6 to 10 months. It's an intensive training in 3 areas: life management, capacity development, financial service access, and income generation support. Then we will provide a very close coaching and follow-up in next 1 to 3 years, so that those ladies can First, at the time of training, they just learn and they just gain knowledge, but they don't know how to utilize those knowledge. But through the follow-up and coaching, they start utilizing knowledge, and then finally, they can use this knowledge to improve their livelihood by themselves. This is the graduation model. Actually, it was developed in Bangladesh by Black to support extreme poor to be bankable. And we modify that model, adjusting to the condition of female home-based worker in Pakistan. And then actually we got a very good response, and we are very happy and very surprised to see the change of behavior of ladies. After sometimes they start to record income and expenditure, and they start saving. And then women are buying
sewing machine, smartphone, and even built their home using savings. And also they improve those change of ladies, male also become cooperative. So now some of the group trying to improve the community, the infrastructure or such kind of movement also we observed. And another activity for next generation, we conduct career educations because we found many young people don't know many occupations. Maybe most of them believe good job equal doctor and engineer. And although there are so many jobs in the market, they don't know. And also they don't know themselves. That's why they cannot choose appropriate job for them. So we target the high school student when they have to decide which course, art or science, or that's kind of a career, a first step of career selection they have to do. Then we provide a career session consisting of self-understanding, then understanding occupation, and then a motivational experience. We are conducting pilot session in 21 schools by 63 teachers right now, and then we are getting very positive response from those participants. So we would like to promote this activity to other schools in Sindh. So they are the outcome and then the contents of toolkit of our project. But why social business promotion handbook? Actually, it was not in original plan. So I would like to introduce why we start this social business promotion training. Our goal is to improve livelihood and well-being of female home-based workers, and then supporting female home-based workers through a graduation model. It's our original plan. That is supporting female home-based workers directly by NGO or maybe government. But our question is supporting female home-based workers directly the only way of supporting them? Maybe there should be some indirect support to female home-based workers through social business. Because social business is aiming to solve a social problem. Maybe some of the problem of female home-based workers can be solved through social business. So promoting such kind of social business can also contribute to the improvement of livelihood of female home-based workers. So that is the background of this social promotion training, social business promotion training. And why we got this idea is actually we had a very good example of social business in our project. We had a very good business expert who is supporting handicraft business in Sakkar as our project expert. And she tried to design the handicraft
kind of product, as well as how to improve quality and also standardize quality. She has done this, and she also established the e-commerce site. Then she started a social business called Love Handmade. When there is a COVID-19 pandemic, because at the pandemic, all marketing channel of those ladies stopped. And then there is a lot of request from those ladies. We want to sell our product. Otherwise, there's no income source. So she started this e-commerce site, and it was quite successful. Even though they cannot move where they live, they can develop the product and also sell to the high-end market. And also this improve the capacity of those ladies very much. Now they understand what the importance of quality and the importance also successful to improve the capacity of those ladies. And I think what she because there are many NGO or maybe the individual who try to sell those handicraft in the market, but not many people are successful. That is because there is a big gap between what those buyer or consumer at the high-end market want, and what those ladies in rural area can offer. Because the buyer, consumer in the high-end market want to have on-time delivery and good quality. And then also the product should be attractive. Actually, the requirement is very high. But what those ladies in rural area can offer is there are a lot of challenges. They are living in remote area. They cannot, some people cannot read and write. And then they have no social enterprises. Maybe we need this kind of people who can bridge the gap between the market and those ladies is necessary. Because these people only cannot reach to this area. So increasing the number of these social entrepreneurs is also very important. That is the background of this social business promotion the training. Our original plan of the project is supporting female home-based work directly through graduation model, and also supporting next generation through career education. That was the original plan, but we also realize we also need these social entrepreneurs who can indirectly support female home-based worker through social business. That's why we developed this social business promotion training to increase the number of social entrepreneurs. This is the background of social business promotion training. Yeah, and now we developed the training. It is self-learning trainings, and then anybody can access to this site. Then anytime, anywhere they can learn, and it's free. And 5 hours. So we would like to promote this training to those university students who are interested in social business.
And this training was developed. Yes, yes, yes. This person, Dr. Tara, he is a professor of marketing. Yes. So this is a background of social business promotion handbook. Then now we have a three toolkit. In addition to graduation model and career education, we have social business promotion training. Then so this is a concept. Then we are developing this toolkit platform where anybody can access to the tool. And then we expect WDD to promote this toolkit through platform and other means to those target organizations for after the project completions. Okay, that is all for our introduction. Thank you very much for listening. Thank you, Mommy-san. Thank you for your detailed presentation and the message from Tada-san. In continuation to introduction of the ITEF project, we have introduction of internship program and pitch event. For this, I will invite Mr. Livelihood. He is Deputy Director of Women Development Department, Directorate of SINT. He is 2D experience working in different government departments, and he is now part of Women Development Department as a Deputy Director. Mr. Livelihood, please. Madam Secretary, Anjum Iqbal Sahab, Mami Asan, Matsuki San, Hafiz Sahab, all my colleagues, thank you very much for inviting me on this event and allowing me to present before you the activity of internship program of Emerging Women Leadership and Pitch event, which is being held today now. So before going into that, I would like to say that must give a little brief about the department. Women Development Department was actually created in 1994, and we have very much ups and downs
and we have been working a lot about the improvement of life status of the women of Sindh province. During this, we have created various acts, rules, and we have conducted various trainings. But in 2016, with the help of JICA, we have introduced this activity of female home-based worker. So in this activity particularly, there is a kit which includes this activity for the encouraging and improvement and the ideas of the young generations who intend to have their ideas for a betterment of the life. The objective of this activity, The objective of this activity was to provide an opportunity to the young women to deepen their knowledge on social business model, connect young women with mentors, social entrepreneurs, and experts who can advise, guide, and inspire these women to bring their ideas and solutions forward, create a peer women bring their ideas forward, bring the perspective and insights of young women into the Light of project to enhance the project. Selection criteria for this activity was to complete social business promotion was must have a business idea to serve rural women, can be very initial and already stages. It doesn't matter that what level they are attaining, but they have an idea and they are very much interested to do it, then they were selected. Must be enthusiastic and motivated, interested in social entrepreneur and uplifting rural women. The process of this, selection of the selection of these interns was that 13 interns were called from interview initially, 6 from Begum Nusrat Bhutto University, that is BNB, Sakkar, and 3 interns from Jinnah University of Women, JUW, Karachi. The process and the activities they were conducted can be seen on yes. This was the process and how they, in 18 to 12 July, their orientation field activities were online, and then field work presentation review, social business promotion handbook at Sakkar or Karachi, and then in August, field work, Sakkar and Karachi, and then in August, prepare cases, stories, review business ideas and online. Then again in 15 to 19 August, mentorship, pitch method, leadership training, it was provided online, and then by 22 to 26 August, prepare presentation of pitch event online. So in this regard, the process was held, and we have been training them and to providing them knowledge from our Women Development Department and from the partners which are being associated with Women Development Department. Internship program started with orientation and yes, Anjum, Madam Secretary Sahaba and myself and joined the orientation session on 18 July. The first week orientation program with the high motivation among interns. Due to heavy rain and other flood disaster, this work was slightly postponed, but we kept on working on the at the homework. Similarly, now we have achievements. You can see the intern visited WDD, SRSO, that is at Sakkar, WDFP at Karachi, and understand the role and activities of the females, and especially with the ideas and the activities of income generating and bringing up the ideas for improvement of the life of women. They also interviewed beneficiaries and developed their case stories. And other training includes improving business ideas, adaptive leadership, how to pitch and mentoring session, inviting women startups. We observed how much challenges the beneficiaries had to face in order to start working properly in their small business despite of their past situation, and how much Light F project had been for help to them.
Now, after this, we have this future endeavor strategy. We will continue it after the completion of this project. Strategy to continue social business promotion, selecting at least 3 public sector universities in rural and urban Sindh, for which we have already in process. We are already in process of rollover plan, which is under process, and approaching office researchers, innovatives, and commercialize or approaching office of research and innovation commission, that is ORIC, that is a software which is user friendly and can help the internees, and anyone can join online and to get himself or herself registered and to proceed further. Share video link orientation. During this process, we will share video link orientations, approaching provincial HEC, that is Higher Education Commission, for helping to promote this toolkit. We will be doing this, and using social platform for university, student academic groups to share orientation directly. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Wali Mohammad Qureshi sir. This is the introduction, and this is all about the internship program we have. So, as I said, that this event was a really awaited event since so long, and due to several reasons, we have been postponing it. But today we are here, and this event is possible. So, NIC Hyderabad has its vital role, and they are our greater supporters to arrange this event. So, for introduction of NIC Hyderabad, we have Mr. Syed Azfar Hussain, Project Director, NIC Hyderabad. I will request him to join us. Mr. Syed Azfar Hussain has diverse experience of media communications, marketing, hospitality, and administration in leading organization, and he's currently is working as Project Director for National Incubation Center, Hyderabad. Mr. Azfar Hussain, please. Am I audible? Great. First of all, I welcome and thank all our guests, Secretary Saiba, Mamia Sam, Masuki Sam, Qureshi Sam, Hafiza, all the team of Women Development Department, and our special fraternity of Hyderabad, the entrepreneurial fraternity of Hyderabad. I can see Ms. Rajpur, the newly elected president of the Women Chamber of Hyderabad, Oshita, our friend from the NIC Jamshoro. We have Dr. Arthur Bhutto. We have the amazing Aisha Amin. She will share her story. She's one of the best examples of social entrepreneurs coming out of Jamshoro region, and she has really worked for this program is so relevant, and when Aisha will share her story, it's so much closer to what the great work JICA is doing and what the project LightAF aims to achieve. So it's great to see the universities, and it's great to see students coming in and joining us. The important of I'm asked to share what NIC does, but it's very important to look at the place of choosing Hyderabad as the next center of National Incubation Center. I was looking at the project areas, and if you can look carefully, that JICA has chosen Sakhar, and then Hyderabad, and then Karachi. The colleagues from Jinnah University are here as well, and Nusrat University in Sakhar. So Hyderabad lies in between. Hyderabad is the best city you can say for this meetup of rural and urban Sindh, and the harmony of between different regions of Sindh. So Hyderabad is the right choice for entrepreneurs and social entrepreneurs to work on their business. We have amazing 5 women business founders at the NIC Hyderabad as well,
business. So about the NIC, we are a public-private initiative. This is the 6th NIC. Before NIC Hyderabad, we have 5 NICs in NIC Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar, and the one in Islamabad. Hyderabad is the 6th NIC, and we'll have the NIC Festival launching soon. What NIC aims to achieve is the growth of entrepreneurs. We as an incubator help budding businesses, entrepreneurs, help them, train them, give them this working space, give them this environment. Because of this, these meetings like these, you have this opportunity to know what the good work other people are doing, and essentially what the community here sitting here is all about NIC. You have the community representation, you have the business representation, you have Dr. Bhutto representing the Sindh University. She has been a very good friend of NIC. So you have the university, you have the business chamber, you have Honorable Secretary Saiba and her team sitting here. These amazing entrepreneurs. So this is what NIC does. We connect all of them, make this an enabling environment and help them, train them, grow their businesses. We would love to help and facilitate all the businesses through the Light F project as well. We would love to facilitate women entrepreneurs around. That is why we have this understanding with Madam Shaida Rajpur as well in Hyderabad. And this facilitation should continue. I congratulate all the project who have completed their projects and the project teams, and wish them all the best. May the best team win today. And thank you. Thank you, Mr. Asfar. After introduction of NIC Hyderabad, we have a very special guest. When in the morning I was talking to her, and she was just about her initiative, so it's a really challenging taboos. So I will invite Ms. Aisha Amin, founder of Better. Challenging Taboos, a non-profit organization that works for gender justice, especially women's access to their sexual and reproductive health and rights in Pakistan. So Ms. Aisha Amin, she will further share her journey with us. A lot of things in my hands. I'll try to make it work. Okay, just Give me a second. okay, perfect. So, hello everyone. How are you all doing? Fine? Okay, perfect. So, you know my name. I'm going to share a little bit about my journey, about my startup. But before that, I want to ask you a question. Do you all know what is your passion in life? Who knows कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? It's a difficult question, right? But can you raise your... Okay. What is one thing that motivates you to wake up every day and work hard? Do you guys know it? Okay. Would someone like to quickly share? Anyone who would like to share what's their passion? Yes. Independence. Amazing. So she wants... I want to know after my 40s. You want to do what? I want to know my skills after 40s. Interesting. So, and this... So passionate. You are passionate, and I can see that in your voice. I can sense that you're very passionate and you want to be independent. And Asfar was saying that it's a very difficult question. So some people find their passion early on in their life. Some people never find it. Some people find it very late in their life. I'm fortunate to have found my passion maybe I'm not sure, maybe in my 20s. So I believe कि अगर आपको अपना passion पता हो, तो ये एक privilege होता है. It's a privilege to know your passion, and it's a luxury to be able to pursue your passion.
So I found my passion in form of Baithak, and this is why I'm here to speak about what I do, why I do it, and I also have the luxury to follow my passion. So while Baithak started in 2018, we work on women's access to their reproductive health. जो जर्नी थी वो तब स्टार्ट हुई जब मैं 11 साल की थी. You know, because sometimes passion ऐसे तो नहीं होता कि रात में आप सुबह उठें और आपको पता चल जाए what you want to do in life, right? It's a process. It's a lot of things in your life that guide you towards what you want to do in life, right? So two big events that happened in my life that motivated me to start Baithak. One was when I was 11 years old. शायद तब मुझे पता भी नहीं था कि ये कहाँ, how will it lead to Baithak? But when I was 11 years old, I got my first period, right? And at that time, 11-year-old kids are like very naive and आपको पता नहीं होता 11 साल के बच्चे कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, right? So when I got my first period, I did not know what it was. I thought that maybe I'm hurt, कि मुझे शायद चोट लगी है, because no one told me about it, because हमारी society में इन चीज़ों पे बात नहीं की जाती. These are taboos and hence, you know, we have a taboo in our name, right? We talk about taboos. लेकिन उसका असर जो है on young girls and women बहुत ज़्यादा पड़ता है, but we're not allowed to talk about it. So when I got my first period, पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे चोट लग गई है. So like a 11-year-old, मैंने बैंडेड उठाई और अपने टांग पे लगा दी कि हो सकता है, you know, it will stop. But that did not happen. फिर आई थॉट कि यार ये क्या चीज़ है. एंड आई रिमेंबर मैंने एक स्टार प्लस का ड्रामा देखा था वेयर अ वुमन हैड ब्लड कैंसर. सो आई थॉट maybe आई एम अबाउट टू डाई एंड maybe आई हैव ब्लड कैंसर. For 3 days I had no idea what was happening with me, and I thought that maybe I'm going to die, or maybe there's something wrong with me, or maybe it is God's way of punishing me, right? Because 11-year-old kids think all sort of crazy stuff. 3 दिन के बाद my mother gave me a pad. If you see a pad, I mean, I'm sure a lot of you have seen a pad, right? It looks like a band-aid. So for me, 11-year-old, I was like, oh, that's a band-aid, which means I am hurt, right? Or there is something wrong with my body. And then the next thing my mother tells me is that अब किसी को बताना नहीं है. Do not tell anyone about it. And then I was like, it's confirmed. There is something shameful about it. Or I'm going to die and it's a secret. So I'm not supposed to tell this to anyone. For 5 years, I kept thinking that there is something wrong with me. It's a shameful thing, which affected me in a lot of ways. Right? It affected my studies, it affected my self-confidence. And you will see, जो लड़कियां हैं, younger girls, जब एकदम से आप उनको बताते हैं कि अच्छा आप बाहर भी नहीं जाना, you have to dress a certain way, you're not allowed to go out, you can't share it with anyone, but we are not telling those young girls why, what's happening to them, because we're not allowed to talk about it. तो जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो क्लास 5 में 6 में when they get their first period, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, उनके शोल्डर्स नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं. If there are people in education, maybe they would understand. And this is why this is a sign of underconfidence, because they grow up thinking that there is something shameful with their body. So after 5 years, I actually found out that it's a very normal process. In fact, it's a healthy process. And there wasn't anything shameful about it. And every girl, almost every girl experiences this. ये थी एक कहानी जो 11 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ. फिर जब 2018 में मैं अपना मास्टर्स करके वापस आई USA, तो ड्यूरिंग माई मास्टर्स आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड आई कुड नॉट फाइंड डेटा ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि हमारे पास जब बात नहीं होती तो डेटा भी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, ख़वातीन की हेल्थ इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. In Pakistan or in any traditional society, we don't like to talk about it. And then if you don't like to talk about it, there are no policies, there are no good policies, or there's no data. So 2018 में मैं वापस आई and I started doing focus group discussions with women in Jamshoro, because I am from Jamshoro, to just learn कि ख़वातीन के challenges क्या होते हैं. What are the challenges that women go through while accessing their reproductive health?
और वहाँ पे मुझे पता चला कि what I experienced 16 years back when I was 11 years old absolutely is something that almost every girl, every woman face. Exactly, thank you very much. Faces the same. They live in shame and stigma. Interestingly, जो उनकी माएँ थी लड़कियों की, उन्होंने भी वही फेस किया था 30 साल पहले. जो उनकी ग्रैंड मदर्स थी, उन्होंने भी वही फेस किया था. एंड ओवर ऑल दीज जनरेशंस प्रॉब्लम वाज देयर. वो वही 60 साल पहले भी ये था और आज भी, जबकि वी आर इन द 21st सेंचुरी, वी हैव एक्सेस टू सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच मीडिया. और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ या मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऐसी चीज़ है, आप किसी गांव में जाएं या किसी शहर में जाएं, किसी एलीट मोहल्ले में भी जाएं, तो वो आपको लिफाफे में ही देते हैं. Right? So it is not related to a geographical area. This is something that's part of our culture, which is very unfortunate. So जब हम लोग ये focus group discussions करते थे, so ख़वातीन इसको बैठक बोलती थी, कहती थी चलें आए बैठक लग रही है. And so these बैठक्स were providing them a safe space where they could discuss about challenges they face while accessing their menstrual health and reproductive health. Because we had doctors in our और डॉक्टर आप लेके जाएं कहीं किसी कम्युनिटी में तो इतने सवाल होते हैं. So they were also getting, because they don't have access to good quality healthcare, right? So they used to ask so many questions. इतनी myths थी, misinformation थी. This is how BETEC started in 2018 while doing focus group discussions with women who started calling this BETEC. So we thought कि अच्छा, this is a need, this is a problem, and this is very common, we need to address this. So 2018 से फिर हमने start किया. We used to go to different expanded, we went to schools and we were talking to young girls about their menstrual health, about their reproductive health, and giving them the confidence that this isn't anything, there isn't anything shameful about them. This is a normal, healthy process. And through this, फिर हम activity based काफ़ी चीज़ों के through हम myth busting करते हैं, क्योंकि there are a lot of myths that harmfully affect women's lives and their mental health. We started doing it last year. हमने जो women's central jail है हैदराबाद में, वहाँ पे भी जो वहाँ पे ख़वातीन थी उनके साथ सेशन किया, क्योंकि this is वो कहीं भी खातून कहीं भी हो, लड़की कहीं भी हो, you know, she goes through menstruation, right? Most women go through menstruation. So this is a picture from there. And you know, we continue doing it. We go to different areas, different places, different communities, different schools. We talk to young girls, we talk to their mothers, we talk to their grandmothers. Now we are having conversations with young boys and it's important that we engage men in this conversation, because you know, men in our society are decision makers, right? They provide, हमारे अब्बा जो होते हैं वो हमें support, protection provide करते हैं, जो हमारे भाई होते हैं, you know. So it's important that they know what it is, right? So they can provide that safe space to women around them, to their daughters, to their sisters, to their classmates, to their partners. So now we are having conversations with young men and boys. Abhi floods mein, you all might be aware, you all must be aware, we have been seeing in news that Pakistan has the worst climate crisis in country's history. So हमारी पहले सोच यही थी कि if women are being displaced, what are they doing for their reproductive health? Because menstruation, periods, they don't stop for a climate crisis. बल्कि ये काफ़ी ख़वातीन शायद relate भी करेंगी कि जिस दिन आपको होता है कि आज मैं शादी पे जाऊँगी, आज प्लीज़ आज मुझे जो है periods नहीं आए, उसी दिन you know you will be like, oh okay, now what do I do? So even during climate crisis, women don't stop menstruating. So our first thought was, how are women managing? क्योंकि अपने घर में you have facilities, but when you're displaced from your homes, how do you manage it? So we have been leading menstrual health management conversations across Pakistan, mostly Sindh, and we have been teaching
Like a lot of women usually don't use pads because these are not affordable, right? They're not affordable, they're very expensive. But in camps, because there's no washing facility, privacy nahi hai, so this is a viable alternative. So we have been going and talking to women about their menstrual health needs, and we have been showing them कि pad कैसे इस्तेमाल करते हैं, so that जितना time वो in camps में है, they can manage their menstruation in a healthy way, because due to lack of menstrual products, women are prone to a lot of infections, which is I think a health emergency that we are neglecting completely right now. Something else we're doing it that Pakistan is one of the topmost countries vulnerable to climate crisis. जो climate change climate crisis की index थी, it shows कि पाकिस्तान में floods आते रहेंगे, climate crisis आते रहेंगे, which means that a lot of women will continue being affected because of lack of access to reproductive health services and menstrual health services. So we are running a petition to demand the government कि climate crisis policy में वो एक gender equitable lens डाले, which means that all women displaced by floods should have access to free menstrual products, should have access to privacy, gender segregated washrooms, clean water, and other reproductive health services that they would need, because it is very, very important. I would also request you, we are running a digital petition on change.org. I would highly appreciate if this is something that resonates with your belief system, please sign it so we can work and advocate for the policy change. This is one last bit that I want to share with people. This is something that we have been working on very recently while being incubated at National Incubation Center, Hyderabad. So we realize that we cannot go everywhere, right? हम तो हर जगह पे नहीं जा सकते ख़वातीन से बात करने के लिए, right? What do we do that provides this quality information to all women in Pakistan and beyond? Because this taboo is not only a taboo in Pakistan but across the globe. So what do we come up with which provides women quality information about their reproductive health in a safe way and in the mode जिससे वो comfortable है? So we came up with an idea, we call it गुल, क्योंकि गुल बहुत common name है, आपको सिंध में भी गुल मिलेंगे, आपको केपीके में भी लोग मिलेंगे जिनका नाम गुल हो, गुल आपको मर्द भी मिलेंगे, ख़वातीन भी मिलेंगे, right? So it's a very gender neutral name. Absolutely, it's a very gender neutral name. So we came up with this idea to make an artificial intelligence powered chatbot that will educate young men and women about reproductive health in Urdu and Sindhi in year 1, and then we'll expand into other languages. Why men? Because it's important to engage men in the discussion as well. और क्योंकि ये voice chatbot है, तो जो लोग people who cannot read and write, even because हमारे पास literacy rates इतने strong नहीं है, they can also access it. And this can be used by anyone who's not tech savvy but has an Android phone and WhatsApp, right? So this is something that we're working on, and we're hopeful we'll be launching this by next year. So when you go back home, today after a busy day, I'm sure there's a lot more that's going to happen today in this event. When you go back home, I want you people to reflect on two things. One, what is your passion if you have not found your passion yet? This lady has already found her passion. So if you have not found your passion, I encourage you to go back home and find out what's your passion, right? Just reflect कि आपको life में motivate क्या करता है. Second, I want you to think about कि reproductive health, menstrual health, and this question is also for all the gentlemen in the room. All gentlemen and all ladies in the room, why is reproductive health still a taboo in 21st century when it affects negatively so many women around us? If they are not going to make it easy, then the cost of the beds should be
Thank you very much. Can we please give her a round of applause, because what she is saying is so relevant that first, sanitary pads either need to be reasonable or free or more accessible, because this is not a luxury product. Second, I think आपने बहुत सही बात की है कि हमारे पास cultural barriers हैं, and this is what we tell women कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जाके पूरी दुनिया से बात करें, right? Sit and talk to each other, educate your daughters, right? Educate your sisters, so that they don't go through the shame and stigma that we faced when we got our period, right? So we can still remain within our cultural boundaries and normalize the conversation, because it is affecting every girl and women we know. Thank you very much. So again, ek jawab aa gaya, and I also encourage you to think why it's a taboo and how can we normalize the conversation around us, चाहे वो आप अपनी privacy में ही करें, right? But how do we make sure that इस ये फिर आगे negatively affect ना करे ख़वातीन को? Okay, जी. I want to share my experience. Recently, I'm working in different camp city and tent city district Hyderabad and also Jamshoro. So I want to share my experience. There was a woman. वो जो है 22वें बच्चे को birth दे रही थी. She was pregnant and she was in Hyderabad tent city. तो जब मैंने उनकी, because I was working on mental health and also their personality rehabilitation, जब मैंने उनसे कंसर्न ली कि आपको ये 22वां बच्चा, the girl was round about 38 or 39 years old. So she told me that I don't have decision making abilities. The decision will be taken by my mother-in-law and also my husband. Even though they don't know how to use sanitary pads, even though they don't know how they have to face this trauma condition and what will be the next parameters and criteria. Because again they will face some kind of situation, trauma condition and flood situation. So I think हमें ख़वातीन की पर्सनैलिटी रिहेबिलिटेशन के लिए सभी फ्लड में बैक टू पवेलियन हुए, रीवाटरिंग की, हमें दोबारा इन लोगों की मेंटल हेल्थ पे वर्किंग करना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर दोबारा ये चीज़ें होती हैं तो हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ. पॉपुलेशन की भी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. ख़वातीन को बताना चाहिए कि वो एक खातून नॉर्मली कितने बच्चे पैदा कर सकती है. वो सीरीज ऑफ चिल्ड्रन जो चल रही है 1 2 3 टीवी, तो कि उसमें बहुत सारे, मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा हैदराबाद टेंट सिटी में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट टैबलेट्स दी जा रही थी या सेरेप्स में, वो आदमी कह रहा था कि मेरे अगर 10 बच्चे तो एक मर भी जाता तो मुझे हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपया मिल जाएगा. तो वो उनको ओवरडोज भी दे रहे थे. तो हमें इस तरीके की जो सिचुएशंस है मेंटल हेल्थ पे ख़वातीन की बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ मर्दों की भी, क्योंकि आप 10 ख़वातीन को समझा दीजिए, अगर उनके घर के अंदर एक मर्द है ना, वो 10 ख़वातीन की चलेगी, उसे एक मर्द की चलेगी. तो आई थिंक ये वी नीड टू एजुकेट आवर मेन टू. सिग्नेचर के हस्बैंड के हेल्प में डॉक्टर हॉस्पिटल में सिग्नेचर पे अगर कोई लेडी जाए तो सिग्नेचर कहते हैं अपने हस्बैंड के लेकर बच्चे मैक्सिमम 3, अभी तो ये रुझान चल रहा है. लेकिन इंटीरियर के साइड पे अगर आप देखिए, उनका ये होता है कि हमारे बच्चे जो हैं कमा के देंगे आपको. अब 22 बच्चे जिस औरत से पैदा किए उसके सलाम है. क्या हालत होगी. Absolutely. These are very relevant insights, and we also see a mindset, because we work on reproductive health, not only menstrual health. Menstrual health is one part of reproductive health. We also see कि for a male child, you know, वो फिर जो औरत है वो बच्चे पैदा करती रहती है, and I think you all would know कि खवातीन का भी हाल होता है. एक तो फैमिलीज पर मैं जानती हूँ 8 बेटियां हो गई फिर पैदा होगा. बिल्कुल, because they want a male child. Let's take one more. लास्ट 4 मंथ्स में फ्रेंड जो है ना उसको बेबी नहीं था, तो मैंने जी तोड़ कोशिश की कि मैं उसको अडॉप्ट करवा के दूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी सबके साथ अब लिंक हो गया है, काम कर रही हूँ, वो एक जॉब है उसका एक्सपेक्टेशन की लाइन, और मेरा ज़्यादा हो गया है, मैं बिजनेस कर रही हूँ. मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर जगह कोशिश की कि मैं उसको एक बच्चे अडॉप्ट करके दूँ, वेदर बॉय और गर्ल, लेकिन मुझे नहीं. Sharing, I think that gives us a good point to reflect, right? कि ये जो सब हो रहा है, we all understand that this is not fair, right? This is not right.
Excellent. गर्ल्स को है अदर हम तो वुमेन 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 तो कहते हैं the other part of the men are also there so why not we educate them too how to behave with the woman and if they are also facing so many problems then my son is discussing with me about what his friends are talking and then he said why not I have a girlfriend because he grew in the Europe so he says it's easy to hear to be a girlfriend but then what happened कि उनको यहाँ पर आप गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है ठीक है आप डेटिंग को गर्लफ्रेंड कहते हो इवन इन द क्लास व्हेन ही वाज इन द क्लास 6 तो उसकी टीचर थी उसके पास 2 मोबाइल थे तो किसी ने कहा कि ये सर की है तो ही वाज थिंकिंग इट माइट बी देयर द बॉयफ्रेंड का है तो टीचर ने उसको कॉल किया और उसको कहा कि आपने इतना बड़ा अब्यूसिव वॉइस यूज कर दिया ऐसे सॉरी टू टीचर तो हमारे यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि हमें बॉयज़ को भी एजुकेट करना चाहिए ना कि ओनली द वुमेन्स वी मोर फोकसेस ऑन द वुमेन बट द बॉयज़ जो कि अदर पार्ट है और जो कि हमारे कल्चर में जिनका बड़ा सा जो है रोल प्ले है कि दे आर डिसीजन मेकर तो जब उनको नहीं पता अवेयरनेस नहीं है कि मेरी बेटी मेरी वाइफ मेरी बहन के साथ क्या हो रहा है मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है तो हाउ वी कैन चेंज दिस सो अदर वी ऑलवेज एस्केप इट हमारे यहाँ हर पार्ट के दोनों चीजें प्रॉब्लम की देखनी ही चाहिए हम एक तरफ देखते हैं दूसरी तरफ देखते हैं That is such an excellent point that no one is having conversations with young men, right? Puberty जो है वो लड़कों को भी बड़ा they also go through puberty but no one is talking about it with young boys and then we see there are a lot of other challenges that stem from lack of conversation. और puberty का दूसरा मसला क्या है बॉयज का कि they did not guide through properly कौन देख रहे हैं my son says कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा puberty देखी जाती है ये porn videos देखे जाते हैं आप मुझे क्या कह रहे हो तो I was literally shocked कि यार ये क्या हो रहा है हम बॉयज को इग्नोर ही कर रहे हैं वुमेन के ऊपर कंसंट्रेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बॉयज भी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि how they can where they can find the exactly right way जो कि other part of the हमारी सोसाइटी है and men and women relationship ऐसे ही बनता है ठीक है और वही जब आप साइकोलॉजिकली यंग एज में बच्चों को और बच्चियों को नहीं गाइड करते तो बड़े होकर हमारे यहाँ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कि हम उनको गाइड ही नहीं कर रहे हाउ टू डील विद द वुमेन हाउ टू डील विद द मैन बोथ तरफ मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट हमें इकट्ठे लेना चाहिए और दोनों को ही गाइड करना चाहिए फ्रॉम द यंग एज व्हिच आई लर्न फ्रॉम द यूरोप के व्हाट दे आर डूइंग विद देयर किड्स हम यहाँ पर शाइनेस में कि बच्चे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते ही इज माय सन ही डायरेक्टली कन्वर्सेशन विद मी कि जी आपके साथ उसने पहली मर्तबा ही मुझे आकर बताया कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ मैं क्या करूँ When I say कि talk to the papa, he said no, I must better कि मैं आपसे बात करूँ कि आप मुझे गाइड करो जी बिल्कुल the way we are dealing in our society और हम कहते हैं मदर्स को नहीं चाहिए फादर्स जो है जो उनके ट्रेडिशंस थे वो गाइड करेंगे जो कि रॉन्गली फिर बच्चे फोन पे जाते हैं जहाँ से और ज़्यादा मतलब गंद पर भरा हुआ Thank you very much, Dr. Arfa, for bringing this because I think it is important that we have this space to speak about these things and we need more spaces like these. Bethak is working on a similar initiative right now. Exactly. you should initiate this thing on Absolutely. कि बॉयज को भी आप लें और गर्ल्स को भी लें और दोनों को गाइड करें Well taken. Thank you for that. We are actually working. If you go to our page, you will see M4M, which is Men for Menstruation, where we are training young men on not only menstrual health, but also like puberty for men so that they can go and have these conversations with their peers. I think I am so happy with the insights that have come from this audience. क्योंकि इतना ज़रूरी है कि हमारे पास इन स्पेसेस में बात होना स्टार्ट हो तभी हमारे अपने घरों में ये बात होगी इट इज़ सो सिग्निफिकेंट टू हैव दीज कॉन्वर्जेशंस एंड हैव मोर स्पेसेस सो थैंक यू सो मच फॉर can we connect after because I know like Peaches right because we have to but let's continue having this conversation after this event
10 सेकंड में बता सकती हूँ। Thank you so much for sharing that. Thank you for sharing that, ma'am. And let's continue to have these conversations in lunch break, even after the event. And let's Thank you. मैं मैम आपसे खुद आके insights लूँगी और personally. Thank you very much for listening to me, and all the best to everyone who is competing today. Have a good day. Tafis. Long presentation, but good. Thank you, Aisha, for a really wonderful presentation about BETEC, and thank you to participants, like audience. They are listening very carefully and participating very well. Though it's taking more time, but I wish that such type of discussions should happen and everyone should talk, or maybe during breaks भी हम इस पे और बात कर सकते हैं. As we had discussion with Aisha, Aisha का एक successful initiative है BETEC, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और उसको बहुत सारे लोग जो है वो देख रहे हैं. लेकिन हमारा आप लोगों को ये कंसीडरेशन में रखना पड़ेगा कि जो हमारा आज का इवेंट, जहां हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और वो पिच करने जा रहे हैं, दे आर जस्ट आउट ऑफ शेल नाउ, तो उनके साथ हम बहुत सारे मुश्किल सवाल नहीं करेंगे. ठीक है. सो वी हैव अनदर स्पीकर, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती थी तो हमें ये सुनना पड़ता था कि सिंध में तो सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर मेन है, विमेन नहीं है. और फिर ये सुनने नहीं, सिंध में सिर्फ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर वुमेन है, बट और कहीं नहीं है. आप बना रहे, मुझे भी ये कहा जाता था, तो आई वाज लाइक मैं अभी नहीं बना सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बना सकते हैं. सो आई एम रियली ग्लैड टू इंट्रोड्यूस मिस शाहिदा टालपुर, प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैदराबाद. मिस शाहिदा टालपुर holds a master's in agronomy agriculture. She established her own business by the name of Urva Enterprises that designs traditional and elegant apparel made in Pakistan. Shahida is the president for Women Chamber of Commerce and Industry Hyderabad chapter. Please welcome Shahida Talpur to share her journey and about Chamber of Commerce. नीचे ही खड़ी होती, ज़्यादा लंबी लगती. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप सब मेंबर्स को मैं बहुत दिल से यहाँ पे वेलकम भी करूँगी, जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं. आवाज़ थोड़ा पीछे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करूं कि जहाँ पे मुझे शाहिदा राजपर और शाहिदा टालपुर दोनों नामों से पुकारा जा रहा है, तो ये वही सिचुएशन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी. सो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाहिदा राजपर है या शाहिदा टालपुर है. तो फ्रॉम पेरेंट साइड राजपर हूँ और हस्बैंड साइड जो टालपुर हूँ. तो सबसे पहले मैं आया गया और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल
बात शेयर करूँगी कि सिंध में जो है बहुत एक बड़ा स्पेस था ख़वातीन के लिए, बिजनेस वाले से कहें या और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी, जिस तरह आयशा ने बात की। इस तरह इतने मसाइल हैं कि हम जो हैं वाकई में मर्दों के जो है अंडर में चलते हैं, और हमें औरतों के अलावा जो है ना, हमें मर्दों की जो है ज़्यादा उनको ट्रेन करना चाहिए कि भाई आप लोगों को कैसे घर में रहना है। जब मर्द हमें सपोर्ट करेंगे, जब एक औरत को मर्द सपोर्ट करता है तो वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो इतना गर्दन और अपने शोल्डर्स जो है वो इतने ऊंचे करके बैठती है और चलती है कि भाई मेरे पीछे इतनी पावरफुल जो है एक पर्सनालिटी है, और मैं कुछ भी करूँगी तो मुझे पीछे से सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट हमें नहीं होती तो हम हमेशा गर्दन नीचे करके और इतने वो छुपा के चलते हैं कि भाई अगर मुझे किसी ने देख लिया या मैं कोई काम करने जा रही हूँ, मुझे किसी ने देखा तो मैं जो है वो घर में कैसे बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा काम कर रही हूँ। तो जब हम बिज़नेस ख़वातीन, हमने जब ये स्टार्ट किया, बिज़नेस वाली ख़वातीन को एक ग्रुप बनाया और हमने उनसे कहा कि आप लोग बिज़नेस में आएँ, और जो कर रहे हैं वो भी यानी कि घरों के हद तक था उनका, और किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, तो हमने माशाल्लाह से उनकी रजिस्ट्रेशन भी करवाई और उनको इतना पावरफुल किया कि वो आज 100 से अब 150 तक हमारी मेंबर्स हैं जो हमारे साथ हैं और रजिस्टर्ड बिजनेस कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, हैदराबाद के लिए, कि हम ये काम कर रहे हैं, और मैं बहुत खुशी महसूस करूँगी कि ये काम अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से करवाया है, और मैं इंशाल्लाह इसको आगे भी इसी हद तक ले जाऊँगी कि मेरी जो ख़वातीन हैं जो अब आगे काम करना चाह रही हैं, मैं उनको बाहर तक भी ले जाऊँ। उनके एग्ज़िबिशन्स हमारे हैं कि हमें उनको एग्ज़िबिशन्स भी करवाऊँ, उनकी जो चीज़ें मार्केट तक, वहाँ की इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाऊँ। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारा जो है 2022 में अक्टूबर में ही हमें लाइसेंस इशू हुआ है इसका चेंबर का, तो हमें बहुत सारी इसमें मुश्किलात भी आई, और अभी भी हमें काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। जिस तरह हमारे कुछ फाइनेंशियली, ज़ाहिर है जब हमने फर्स्ट स्टेप लिया तो हमारे हाथ में तो कोई चीज़ नहीं थी, सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसी हिसाब से हमने चीज़ें की। तो अब हमें मार्केटिंग का भी इशू है, हमें फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं, और जो ख़वातीन हमारी दूर दराज की भी हैं, क्योंकि ये जो है सिंध का दूसरा चेंबर होगा। पहले तो कराची में है तो वहाँ पे वर्किंग है, तो वो तो सारे वहीं के हवाले से ही इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सारा काम होता है। यहाँ पे वो दूसरी सिंध को जो है वो कवर नहीं करते। तो मैं जो सारी पूरी सिंध की ख़वातीन जो हैं हम उनको कवर कर रहे हैं, हम पूरी सिंध से जो है ख़वातीन ले रहे हैं और उनकी मेंबरशिप भी कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि और भी अगर NIC के थ्रू जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है वो आए और हमारा साथ दे, और हम सब ख़वातीन मिलकर एक पावरफुल एक इदारा बनाएं जहाँ पे हम अपने जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, हमारे जो आर्टिजन्स हैं हम उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारा एम है कि हम सिंध की ख़वातीन को इतना पावरफुल बनाएं कि वो कहीं भी जाएं तो वो इतना प्राउडली कहें कि भाई हम भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी ये काम करते हैं। तो जिस तरह मुझे आयशा की बातें बहुत अच्छी लगी, और मैं इनको अप्रिशिएट करूँगी कि इन्होंने इस टॉपिक को लिया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम भी करना चाह रहे हैं। हमने भी कुछ इस तरह के जो इवेंट्स भी करवाए हैं, ख़वातीन के पास गए हैं, गांव में गए हैं उनके पास, तो जो इतनी वो हो जाती हैं, शर्माती हैं इन चीज़ों पे, और इवन वो बाहर खुद नहीं जाती, अपनी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो मर्दों को लिस्ट बना के देंगी या उनको कहेंगी कि मेरे लिए लेके आओ तो फिर मैं ये बनाऊं। तो उनको हमने ये फैसिलिटी भी दी कि आप लोग हमसे रब्ता करें, और जिस जगह से भी आपको ये चीज़ें चाहिए हम आपको वहाँ से लेकर भी देंगे और आपका डायरेक्ट उनसे रब्ता करवाएंगे। और हमारी काफ़ी इस तरह की कोशिशें हैं कि हम ख़वातीन को आगे लेके जाएं, क्योंकि ये माशाल्लाह से मर्दों का मुआशरा है, हमें थोड़ी सी जदोजहद और करनी पड़ेगी। और मैं स्पेशली मर्दों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा तो करके देखें, उनको भी एक मौका दें कि वो क्या करना चाह रही हैं, और उनके इतनी टैलेंटेड ख़वातीन
खवातीन हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये काम ये खुद करती हैं, लेकिन वो नहीं निकल सकती क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं है। अगर वो बाहर जाएंगी तो जाहिर है उनको मर्दों के माशरे में ही निकलना पड़ेगा। जी हैदराबाद में एशिया की सबसे बड़ी चूड़ी साजी की जो सनत है वो हैदराबाद के अंदर है। क्या हम जो खवातीन होम बेस्ड वर्कर्स हैं जो बैंगल का काम करती हैं, चूड़ी साजी का काम करती हैं, क्या हम उनको अपने साथ इनरोल कर सकते हैं? क्योंकि उनमें कुछ खवातीन ऐसी जो कांच की चूड़ियाँ तो बनाती हैं, उसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स की भी बैंगल्स बनाती हैं। अच्छा, वो हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह के ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है ना, तो हमारी जो खवातीन हैं जो बिज़नेस करती हैं तो वो उनके साथ एक लिंक बनाएंगी और वो उनके साथ अगर प्रोडक्ट वो उनको उनसे लेंगी और उनकी वो सेल करेंगी, जिस तरह की बिज़नेस कम्युनिटी का होता है, वो जो उनकी जो काम कर रही है वो आर्टिज़न में शुमार होंगी। तो ये हमारा जो चैम्बर है वो आर्टिज़न को भी फुली सपोर्ट कर रहा है, और अगर इस तरह के कोई ग्रांट्स मिलते हैं या इस तरह की कोई वर्कशॉप्स होती हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं, तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे आर्टिज़न हैं हम उनको आगे लाएं और उनको ये चीज़ें जो वर्कशॉप्स वगैरह हैं हम उनको करवाएं। और अगर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद करना चाह रही हैं बिज़नेस, तो उसमें भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। कुछ खवातीन हैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे उनको लेबर डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट करवाया गया था, उनकी पेंशन भी इनरोल्ड हुई है और वो एज अ लेबर भी इनरोल्ड हुई थी होम बेस्ड वर्कर्स के अंदर। तो अगर आप कहते हैं कि आर्टिजन में आता है, तो मुझे लगता है उनको भी फिर यहाँ पे शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हीकल्स। जी जी बिल्कुल, और ये हमारा एम भी यही है कि हम जो सिर्फ हम एंटरप्रेन्योर नहीं, आर्टिज़न के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आर्टिज़न की भी हम एक जो है लिस्ट बनाएंगे जो हमारी काम करने वाली ख़वातीन हैं। तो जो हमारी बिज़नेस करने वाली ख़वातीन हैं, वैसे तो बेसिकली ये चीज़ जो होती है बिज़नेस करने वाली ख़वातीन के लिए होती है, लेकिन अगर हमारी आर्टिज़न काम करेंगी तो हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे लिंक्स हैं। तो माशाल्लाह से अगर जितनी भी हमारी ख़वातीन आर्टिज़न्स हैं वो हमसे रब्ता करें। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स में भी ये कहा है कि मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है कि जो हमारी आर्टिज़न्स हैं मैं उनको आगे लाना चाह रही हूँ। बिज़नेस तो हमारी ख़वातीन को हम माशाल्लाह से अब खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह करें, क्या करें, लेकिन आर्टिज़न जब हमारी आगे आएंगी तो हमारा इकनॉमिकली बहुत जो है सपोर्ट मिलेगी। 2018 में जायका का जब स्टार्टिंग था ये प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे होम बेस्ड वर्कर्स के अंदर काम किया गया था और उसका मेन पर्पस ये था कि मिडिल मैन को रिमूव किया जाए और उनकी इजी एक्सेस हो मार्केट बिल्कुल, पर। ये हमारा भी यही है कि हम चाह रहे हैं कि जो मिडल मैन है उसका रोल हम ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर मैम जो हमारे पास जो मोस्टली सर्वाइवर्स आती हैं, तो वो छोटे छोटे ये काम जो है घरों में ऑलरेडी कर रही होती हैं, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बना ली और कुछ जो है क्लॉथ से चीज़ें बना ली और उनको सेल आउट करना, तो फिर उनको हम जो है आपसे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर उनमें उनकी हेल्प आउट हो सकती है। जी बिल्कुल, और हमारा अभी है एक प्रोजेक्ट जिसमें हम ये कर रहे हैं कि एक वर्कशॉप बनाएंगे जिसमें हमारी आर्टिजन्स, जिस तरह अगर आपके पास इस तरह की ख़वातीन हैं तो हम, हाँ, तो हम आपके पास एक वर्कशॉप बनाएंगे। वहाँ पे जो है आपके पास जितनी भी काम करने वाली ख़वातीन होंगी हम वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम उनको अपनी सारी जिस तरह की जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, तो वो हम उनको मुहैया करेंगे और उनसे हम काम करवाएंगे, फिर उनको उन जो काम की उनके हम पे करेंगे। अभी हमारी है इस पे मीटिंग चल रही है कि हम जो है इस तरह की वर्कशॉप्स गांव-गांव में भी बनाए, विलेजेस में जाएं, वहाँ पे इस तरह की जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो एक ग्रुप्स बनाएंगे, तो वहाँ पे हम उनसे काम करवाएंगे, हम उनको सारा मटेरियल भी देंगे और उनके जो पे करके हम उनसे वो चीज़ें लेंगे जो उनके काम की होती हैं। तो इस तरह मैं आप सब लोगों की थैंकफुल हूँ अगेन कि आप लोगों ने मुझे इतना सुना, और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ा इदारा है ख़वातीन का, और ख़वातीन हमारा जो है समझे घर का सरबराह है, तो उसके साथ अगर ख़वातीन खड़ी हैं तो घर जो है वो जन्नत बन जाता है। तो अगर एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है
तो एक कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, और माशाल्लाह से मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है और मेरे बाबा का। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं थैंकफुल हूँ अपने बाबा की भी, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया कि आप जो है कभी भी किसी से डरना नहीं। ये मर्द जो है ना, ये तो भाई और बाप तो है, ये इनसे डरने की क्या बात है। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में इतनी आ गई कि यकीन करेंगे, मैं अपने हमारे गांव से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे मैं सारा जो मेरे बाबा का ज़मीन का सिस्टम था वो मैं चलाती थी। उनका पूरा जो हिसाब किताब बनता था वो मैं चलाती थी, और माशाल्लाह से 5 भाइयों के होते हुए भी। तो वही मेरे बाबा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। इसी तरह मैं आप सबसे भी कहूँगी कि अपनी औरतों के पीछे, जिस तरह आपके पीछे औरत है, तो आप भी अपनी औरतों के पीछे सपोर्ट करें, उनको एक पावर दें। और यकीन करें, अगर मर्द थोड़ा सा भी इस तरह हो जाते हैं ना, तो औरत इतनी वो हो जाती है कि नहीं, आज तो मैं बाहर नहीं निकल सकती। अगर मर्द का मूड ख़राब हो जाए थोड़ा सा भी, तो वो बस अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। नहीं, आज मैं खुद इस तरह करती हूँ कि नहीं, आज साहब का मूड ख़राब है तो मैं बाहर नहीं निकल सकती, चाहे कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें और इस इदारे को नहीं, बस मैं सबसे कहूँगी कि सपोर्ट चाहिए, और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। एक मोरल सपोर्ट जो हिम्मत और ताकत देती है ना, वो हमें चाहिए। नहीं, उसको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो हम अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में मर्द भी ना सिक्योर होगा। बिल्कुल, हाँ। नहीं, अगर हम अपनी जो घर की जिम्मेदारियां हैं उसको इग्नोर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मर्द तो तंग होगा इस चीज़ से। और अगर हम वो भी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि एक नई जनरेशन को, एक नई चीज़ को हम पैदा कर सकते हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं थी। अल्लाह ताला ने औरत को ये हिम्मत और ताकत दी, और औरत के पाँव तले जन्नत दी। तो इतनी औरत ताकतवर है कि वो घर भी संभालती है, बिजनेस भी संभालती है, और मुआशरे में भी अपना मकाम जो बनाती है। अगर हम अपनी चीज़ों को जो है एक लिमिट में रखें, अपने माइंड में एक चीज़ बनाएं कि भाई मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो फिर आप देखें, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू। थैंक यू मिस शाहिदा टालपुर, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं। अगर आप लोग बाद में भी बात करना चाह रहे हैं उनके साथ, तो ड्यूरिंग ब्रेक्स आप उनसे बात कीजिएगा। हम उर्दू में एक चीज़ कहते हैं, दिल थाम के बैठे। तो अब जिनके दिल की धड़कन सबसे तेज़ है ना, वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं कब अनाउंस कर रही हूँ कि पिच उन्होंने शुरू करना है। लेकिन एक थोड़ी सी एक चीज़ और आ गई है, मुझे लग रहा है सब थोड़े से थक गए हैं, तो व्हाई नॉट हैव अ टी ब्रेक फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर पिच। सो इससे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनको भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी। सो लेट्स हैव अ टी ब्रेक फॉर 10 minutes and not more than 10 minutes, but please keep it 10 minutes and come back please. चाय जो है वो बाहर है, रूम के बाहर, प्लीज़।